Start. So let's take small problems. You can take down diagram you have to draw. So we have an observer. You can write down the first question. Observer. OBSERVER. Observer himself or herself is 1.5 meter tall. Observer dash 1.5 meter tall. ऐसे लिखते जाइए. स्पेस में छोड़ दिया बेटो. स्पेस छोड़ दिया. Oh, पेज है. ठीक है. Observer is 1.5 meter tall and is 20 meter away, right? So these are the salient points, and is 20 meter away from a tower that is 22 meter high. So we have three things in this problem so far. We have an observer, and the observer is how much? 1.5 meter tall, and this observer is 20.5 meters away from a tower, and the tower itself is how much? 22 meter high, right? This is a short answer question. Determine the angle of elevation. You need to find out the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer. So unless and until you draw the diagram, nothing will be clear. You need to find the angle of elevation of the top of the tower. ठीक है ना? आगे मानो समझ में आया? Angle of elevation you have to find out. So first make your drawing. Angle of elevation of tower top from observer eye. Where does Zuzu stay when you all go? Those, I don't know her name, but like. Oh, in B Tower or D Tower. Okay, E Tower. They keep a pet home. Two dogs. He stays. He has food and all at that time. No strike, nothing. No, usually he does, but this time he didn't. That's he did. Generally they strike at that time. Okay. इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए. So whenever these, see, end of the day, you should have one common thing in your mind. The diagrams are going to end in right angle triangles only. So let us make one. Observer will always stand on ground. Tower will also stand on ground. Picture वहीं से clear हो गया. This is my tower. Do I know the height? Yes, I know the height. I have an observer. This is the observer. Do I know the height? I know the height. So let PQ be the tower. This is 22 meter. And let AB be the observer. How much is the observer? 1.5. Then definitely there is an angle of elevation from the eye of the observer to the top of the tower. Where is it gone? Yeah, there it is. Right? So this is the angle, and when an angle is always with the horizontal. So plot your horizontal. This is your horizontal. And yeah, I'm asking you to find this particular angle. Very easy. Try and find it. How much will be this part? It will be 22 minus 1.5. हाँ 22 minus 1.5. 20 minus 2 करेंगे तो 20. तो 20.5 हो गया. So this will be 20.5. और ये कितना दूर पे है? 20.5. That means if you take tan of theta, that is equal to, इसको क्या ले लें? D ले लें. PD by AD, which is equal to 20.5 by 20.5. So we say tan theta, यहाँ से एक step है, हाँ, tan theta is equal to 1. So here we write a step. Theta is equal to tan inverse 1, we say. Tan inverse 1 means you should know, or you can write tan theta equal to 1. How much of tan theta is 1? 45. Tan 45 is 1. So theta must be equal to 45 degree. You have to remember the table. Tan 45 is 1. Sin 45 is 1 by root 2. Cos 45 1 by root 2. So tan 45 1. So tan theta equal to 1 means theta is equal to 45 degree. That means we have found out that the angle of elevation is 45 degree. समझ में आया? Another problem. Done. All of you understood? Pew? समझ में आया बच्चा? ठीक है? This step ये से लिखने से भी हो जाता है. Tan theta equal to 1 means theta equal to tan inverse 1 we write. Inverse. Inverse is just a function जो काट देता है दूसरे function को. ठीक है? Inverse is like
If you have virus, inverse is like the antidote of virus. Virus into antidote is ऐसे देखो interesting. तो ना मजेदार देखो. Virus has infected man. Understood? So virus into antivirus man. This should ultimately give you the man. And virus cancels antivirus. Inverse cancels the other function. But since we are doing it in an equal, so this is same as writing. How did this step come? Tan theta is like that virus of man equal to 1. So tan inverse tan of theta is equal to tan inverse 1. So I am writing antivirus virus man equal to antivirus man. So antivirus virus cut theta is equal to tan inverse 1. This is how we write it. So theta is equal to 45 degree. ठीक है? Understood the inverse culture? चलिए next question. A ladder. We have a ladder. How do we keep ladders? How do we keep ladders? We keep ladders like this on the wall, है ना? ऐसे लगा के रखते हैं. So a ladder 15 meter long. आप खुद ही रफ स्केच बना के भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं. A ladder which is 15 meter long makes an angle 60 degree with the wall. Ladder is making an angle of how much? 60 degree with the wall. Find the point at which the ladder touches the wall. Find the point at which the ladder touches the wall. बोले तो बच्चा, this is my ground level and this is my wall. Ladder is making how much angle? 60 degree. आप उस साइड से भी ड्रॉ कर सकते हो. आपको बेसिकली ये पॉइंट पूछा है A, B, C. They have given you the length of the ladder and they are asking you at what point. Means they are basically asking you what is the length of AB. At what point does the ladder touch the wall? कीजिए. At what point does the ladder touch the wall? समझिंग? So आपको क्या पूछा है? देखो 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 देखो, आपको ये दिया है और ये पूछ रहा है. Basically you have to take sine ratio. Sine is opposite by hypotenuse. Now sine 60 is equal to what? What is tan cos 30? Root 3 by 2. Exam you write for an application. Dear sir, please request one additional seat for a known person. Our family friend Mr. Jaideep Das will come and sit beside me. Will not help me, only for moral boost during trigonometric tables. ऐसा एप्लीकेशन डाल दो स्कूल में. Sin 60. Sin 30 half, so sin 60 is root 3 by 2. Root 3 by 2 is equal to unknown by hypotenuse, and you know what is the hypotenuse. लैडर का साइज दे दिया ना आपको. 15 मीटर लंबा लैडर है. $15 meter. How are you solving the problem without the figure is there? Sorry. Yeah, without the figure you should not be able to solve. So ladder will form the part of the hypo. हो गया नेहा? 7.5 root 3 और बस उतना रखने से ही चल जाएगा. So the ladder touches the wall at a point 7.5 meter above the ground level. अब रुको. Once if have all of you got 7.5 root 3? Right? Now say suppose they give the diagram to you in the exam. नीचे नहीं ऊपर ही रखो. ऊपर भीगने दो, नीचे मत भिगाओ. They give the diagram to you in the exam and they make this angle as 60. तब करो तो. Once you have done with this as 60, this is like how I drew the diagram. Say suppose the diagram is given to you and they say that this angle is 60. बोल भी सकते हैं ना. This also is making an angle with the wall. Actually that was the correct question. It did not say ladder makes an angle 60 with the ground. If you see the question was ladder makes an angle 60 with the wall. Wall means this had to be 60, not this. I actually went wrong. Now take 60 this and try to do. And then No. I'm saying no. There are two aspects to it. First of all, read the question. If I go by the question as printed in the book says the ladder makes an angle 60 with the wall. Which is the wall? This is the wall. This is the ground. So the 60 degree should have been here. I drew it by mistake here. Now how do I get a correct question for this diagram? The ladder makes an angle 60 with the ground.
तो आपने ग्राउंड का प्रॉब्लम किया, अभी क्वेश्चन को काट के ग्राउंड कर दो। हाँ, ग्राउंड। नाउ आई वांट यू टू डू अनदर प्रॉब्लम वेयर लैडर मेक्स एन एंगल विद द वॉल। तो 60 विल स्वैप नाउ हियर। ये समझ में आया? लैडर विद द ग्राउंड एंड लैडर विद द वॉल, ठीक है। सौर्या, ग्राउंड के साथ होने से ये एंगल होता है, वॉल के साथ होने से ये एंगल। चलो वॉल के साथ करो तो क्या हुआ? अर्जुन आज नहीं आया? I woke up late. Ew. Then the ratio, Neha, as you said, would be correct. We will take now cos. Cos 60 is half because sin 30 is half. You have just हाँ, मगर लेट्स से मेरे को साइन के रेशियो ज्यादा अच्छे से याद है, तो मैं एंगल से लेके सीधा सीधा बेस यूज कर सकती हूँ क्या साइन? आप पहले साइन निकाल, देखिए सपोज यू नो ओनली साइन रेशियोज, सो इन योर दिस प्रॉब्लम दिस इज 60, so sine will give you the base. Once you get base, then base, hypotenuse, again Dadaji you have to remember Pythagoras and then solve. So as an examiner, what is the marks of the question? 2 marks. आपका एफर्ट बहुत ज्यादा हो गया है, इतने में आप एक और क्वेश्चन, बट डोंट डेवलप दिस मेंटालिटी दैट आई एम स्टेप मदरली नहीं होना है। आई रिमेंबर साइन, हमें साइन और कॉस के बीच के रेशियो को एक्सप्लॉइट करना है। जैसे ये 60 है तो वो 30 पे इक्वल होगा, वो यूज कीजिए। कितना भागेंगे ऐसे करके? मेरे लिए कोई रॉन्ग नहीं है बेटा बाप, पर आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हाँ, if nothing happens, then mathematically you are correct. But after having mixer grinder and peeler at home, you are जमीन में बैठ के पीस रहे हो सब्जी मसाले और छुरे से आलू पील कर रहे हो, दोनों ही काम सुंदर नहीं होंगे, और मेहनत अपना अलग से। Now your choice. Okay, next question. Next question is a little bit interesting. चले, ratio of height of a tower. Ratio बोलने से it's a something by something. Ratio of height of a tower to length of shadow. Just look, if I am standing like this and the sun is on this side, where does my shadow fall? Shadow is always on, नहीं, shadow बोले तो base बता रहा है आपको. On the ground. If I am the perpendicular, my shadow is the base. समझ में आया? हाँ, ओके क्या? तुम क्या सोच रहे थे? shadow ऐसे आसमान में लटकता है क्या? कुछ भी है. So the ratio of height of a tower to its shadow. So it means height by shadow. Height by shadow is √3:1. Height by shadow is equal to √3:1. Find the angle of elevation of the sun. Find the angle of elevation of the sun. Now, can anybody draw this diagram and explain me with the sun and everything? दिखाओ. This is the power. हाँ, this is the shadow. हाँ, हाँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे कैसे हुआ? डायग्राम एब्सोल्युटली करेक्ट है. सन का एक्सप्लेनेशन समझाइए. सन यही नहीं, बिल्कुल उस टिप में है. Extended like this. Very good. That's the sun. So this diagram is like this. This is the tower. This is the shadow. Sorry, यहाँ पे लिखने से आप देख नहीं पाओगे. So diagram is something like this. This is the tower. This is the shadow, and the sun is somewhere here. So the angle of elevation for the top of the tower is same as angle of elevation of the sun. These are languages that they use. ठीक है? इसको solve कीजिए. Shadow is to tower is √3:1. So you need to get √3 and 1. So क्या आ रहा है आपका? What thing are you taking? You're taking tan 30. Sorry, tan 30 नहीं, tan theta. Tan theta is coming √30. That means theta should be how much? 60. Tan 60 is √3. Tan 30 is 1 by √3. Tan हमेशा जितना बढ़ता है वैल्यू बढ़ता है. Tan 60 is √3. कुछ नहीं यार, सुबह उठ के 2-3 बार लिखते रहोगे ना, अपने आप याद आ जाएगा. Yesterday I came across one reel. Two very hip girls.
I think somewhere in Connaught Place or something in Delhi. So these street bloggers are there na. So this 20 rupees, 100 rupees is for you. Can you tell me what is 16.5% of 100? 16.5, is it 20? 16.5% of 100. So another one is replying, I think it's 16. The other one is like, come on, babe, it's not 16. He's asking you 16.5%. 16.5% of 100 is 16.5. So they could not answer that. Come on. So you should then read the comments. The costlier a school you study, the more dumbo you are. All you know is to make reels. All you know is to do fashion. Okay. And you should see the explanation of the other girl. Hey babe, come on, he's asking you 16. How can it be 16? फिर बालों को दो बार ये भी कर लिया. How can it be 16? चलो next question. Angle of elevation of a tower from a distance 100 meter from his foot. Try to draw the diagram as I speak. Angle of elevation of a tower. तो एक टावर बना लो पहले. कैसा भी एक टावर बना लो. See, this is the trick to do the problem. एक टावर बना लो. And once you have a tower, make a basement also. Basement means the podium of the tower. Make the base. Yes. Now your diagram will come out. So now it says, see, angle of elevation of a tower. Angle of elevation of a tower, 100 meter from its foot. 100 meter from its foot is 60 degree. Is 60 degree. What is the height of the tower? So again you are playing on the ratio of tan. Tan of 60 is height divided by 100. Tan 60 is root 3. So it should be root 3 into 100. That is 173.2. Vivan, how did you make that diagram? गलत बनाया बेटा. How can your tower be inverted? उल्टा थोड़ी होगा टावर. पहले हमेशा देखो जब भी कोई टावर क्वेश्चन बोलता है ना, यू इमीडिएटली मेक वन टावर. टावर हैज टू स्टैंड ऑन सम ग्राउंड एंड देन मेक अ लंबा ग्राउंड लाइक दिस. अभी आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है. वन ऑब्जर्विंग फ्रॉम बोथ साइड, वन साइड, व्हाटएवर इट इज. हैव यू अंडरस्टूड? ये तो इजी प्रॉब्लम है. अब थोड़े से एक लेवल डीपर जाएं. ये सब प्रॉब्लम समझ में आ गया. दीज आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज. अमूल्य साहब ऑल ओके? चलें आगे थोड़ा सा वन लेवल डीपर. चलवी बानिया मैडम all okay? One level deeper now. Oh, my favorite problem. Yes, let's start. A tree breaks due to a storm. ठीक है, आप लिख लो क्वेश्चन. ओके, ऐसे मैं ऐसे क्वेश्चन लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, then we'll make the diagram. So there is a storm. Storm होने के बाद क्या हो गया बेटा? ओके, ट्री ब्रोक. वेरी गुड. ये सब फालतू दिया गल्ला है क्वेश्चन का. Tree broke and the broken part bends so that top of the tree broke, broken part falls, top touches ground. ठीक है, कहानी है. पेड़ बीच में टूट के नीचे गिर गया. हाँ, तो उसका टॉप जो है वो हाँ आ गया जमीन पे. ठीक है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. टॉप टचेस द ग्राउंड 30 डिग्री. मतलब कैसा है? मतलब कुछ ऐसा है, ये है और उसके बाद ऐसा है. ठीक है ना. ओरिजिनल ट्री क्या था बेटा? ओरिजिनल ट्री, दिस इज ABC. ओरिजिनल ट्री यहां पे था. ये चीज ठपाक से गिरा. गिरा कैसे? ऐसे सर्कुलर पाथ में गिरा. गिर के आके यहां पे आया एंड दिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड. अब आपको इसमें खूबसूरती डालना है तो आप डाल सकते हैं. योर ओरिजिनल पार्ट ऑफ द ट्री वाज समथिंग लाइक दिस एंड नाउ द ट्री हैज फॉलन डाउन एंड इट इज लाइक दिस. ठीक है, द ट्री हैज फॉलन. राइट. डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री and to the point where the top touches the ground, and to the point where the top touches the ground is 8 meter. 8 मीटर है. कितना? 8 मीटर. समझ में आया? Find the height of the tree. Find the height of the tree. Yeah, entire tree. ट्री बोले तो पूरा ही होता है. Find the height of आद्या बोले तो क्या सर जब नीचे झुक के काम कर रहे हैं वो हाइट निकालना है. कुछ भी बोलते हो. Find the height of the tree. तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट
यूज सम रेशियो टू गेट द पार्ट जो स्वाभिमान के साथ खड़ा है, एंड देन ट्राई सम रेशियो टू फाइंड द length of the part which has fallen, and then add both, thinking that no part of the branch fell off as twigs. ठीक है ना? सुबह होते ही बिग बास्केट डिलीवर्ड अमेज़न, घर में खाली सारा टाइम अमेज़न बिग बास्केट, अमेज़न बिग बास्केट। विवन डार्लिंग इजी है बेटा, लगा ना? 30 का रेशियो में खेल, इसको निकालना है, tan 30 लगाएंगे। tan 60 कितना आया? लास्ट प्रॉब्लम यू ऑलरेडी tan 60 √30, सो tan 30 इज 1/√3। पढ़ रहा है ये बच्चा घर पे, अभी पता नहीं देख के बोला कि नहीं पढ़े, ऐसे आंसर देना है तो पढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। tan 30 इज 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट? और आंसर्स रूट में ही रख दो, बर्तन एक बार मांजेंगे लास्ट में जाके। सो tan 30 इज AC/8, सो AC का वैल्यू मिल गया आदिया मैडम? अरे क्यों नहीं मिला? What nonsense you are saying? Tan of 30 is equal to AC/8. So AC is equal to 8 tan 30. 8 tan 30 is 8 by, बस हो गया, AC का हाइट मिल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? अब आप नाउ आद्या योर फेवरेट थिंग कम्स, यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू गेट दिस वन ऑल्सो, और यू कैन अप्लाई कॉस ऑल्सो। लेकिन कॉस अप्लाई करेंगे, cos 30 में √3 आता है, कुछ किचिक होने का चांसेस है। सो लेट्स अप्लाई cos 30। सो व्हाट विल से? cos 30 इज इक्वल टू हाउ मच? 8 by AB by CB, that is 8 by how much? CB, which is equal to √3/2। तो CB कितना हुआ? CB इधर चला जाएगा तो कितना हो गया? 16/√3। तो टोटल हाइट कितना आया? 8 + 16 is how much? 24/√3। But don't leave the answer like this, please rationalize it. So it becomes 24√3/3, which is 3 8s are 24, which is 8√3। If you get time, you can bring to decimal, otherwise इतना कुछ नहीं है। People will like and love you for your way of doing the problem rather than getting the accuracy up to decimal. Decimal accuracy will be your headache only in the chapter of mensuration. Mensuration is exactly grade 9, but in grade 9 you got 56 divided by 7, now you will get 55.28 divided by 6.23, and you have to bring the answer in decimal. वहां पे तुम्हारा दिमाग खाएगा। 9 and 8 decimal mensuration is just 8 and 9 and 10 are just same. Only thing is that there you had QT figures, you will not have QT figures. So yeah, this was an NCERT problem, by the way. All of you could do it. Sanvi ma'am, understood? Acha, now tell me, now that we have done so many problems, hey Arjun, you also, now that you have done so many problems, does listening to a problem and making the rough sketch come natural to you? क्या आपको लगता है that you are confident enough to make the diagrams? ठीक है? Then your next hurdle will be only remembering the ratios. There are two hurdles in this chapter. One is remembering ratios, one is drawing the diagram. If you think you are able to construct the diagram, I will say 95% of the hurdle is gone. बाकी 5% रेशियो को 3-4 बना के, मैंने बोला ना, एक टॉयलेट सीट के पास, एक वॉश बेसिन के पास, एक रेफ्रिजरेटर के पास, बस 3 जगह पे देखते रहोगे रोज, अपने आप याद आ जाएगा। हाँ, टेक्निक है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, क्या बोला था? टावर बोलते ही क्या कर लेने का? जोई मैडम, टेक आउट योर पोस्ट इट एंड ड्रॉ दैट टावर, एंड वंस यू ड्रॉ अ टावर आल्सो मेक द पोडियम। Have you all done that much? Listening to the question, you should start solving it. The angle of, and Neha, always draw the tower like that and draw the podium across. So you don't know how the problem will come up. It may be viewers from both sides also. कोना में मत बनाना, हाँ ठीक है। We want try to have the tower only as a straight line. 2D मत बनाओ, 2D बाद में डाल देना। समझ में आया? आदिया मैडम, ड्राइंग हो गया? हाँ, वो मत रखो, वो मत रखो, हम खुद करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या रेशियोज किया, आज क्या क्या किया? tan 45 इक्वल टू 1, tan 60 इक्वल टू √3, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, sin cos 30 इज √3/2, and sin 60 इज इक्वल टू √3/2, sin 30 इज हाफ। अरे cos 30 इज √3/2 तो sin 60 नहीं होगा?
चलो, now the angle of elevation of the top of a tower that you draw. Now listen, from 2 points, then also listen, I've still not said they are on either side. 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it. In the same straight line means they are on the same side. मतलब अपना डायग्राम कैसा होगा, ये टावर हुआ है, एक को ऐसा बना लीजिए, एक पॉइंट इधर तो एक इधर, ऑन आइदर साइड्स नहीं बोला है, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. ओके, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंटरी. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंटरी? They should add to 90. So if this is frog, this is no 90 minus frog. You are only donkey that you are giving that answer. If this is frog, this is 90 minus frog. So if this is alpha, this is 90 minus alpha or x, whatever you take, right? So कैसा था? Top of a tower from 2 points that are at a distance. Now distance भी ले लो, 4 मीटर 9 मीटर. अब कौन सा 4 मीटर होगा? जाहिर सी बात है यही 4 मीटर होगा. और ये पूरा कितना दूरी पे है? 9 मीटर. मतलब इधर कितना है? 5. वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है. आपको क्या निकालना है? Prove that the height, prove that the height of the tower is 6 meter. मतलब एक तरफ से this question is a very cutie question. हमें अगर ये सॉल्व करके 6 आ गया तो हम घर खुशी खुशी जा सकते हैं. We know our answer is correct. ठीक है ना? एक क्वेश्चन आ सकता है, डिटरमाइन द एनिमल टू विच सार्थक रिजेंबल्स. तो उसमें आपको डाउट रहता है कि आपने आंसर क्या लिखा. इसमें आया प्रूव दैट सार्थक इज अ डोंकी. तो अगर आपका डोंकी आंसर आ गया तो उसमें आपकी खुशी अलग है, आपका आंसर करेक्ट है. बोल दिया ना, प्रूव दैट इट्स अ डोंकी. यस मैम. Basically, we have to assume the value of the perpendicular to be 6 and then just use a ratio and then keep these for complementary. Yes, yeah. Or else you use complementary ratio. That also you can do. Whatever is sine of this or cos of this, so better you use this as 6. Let us assume that the height of the tower is 6. हाँ, और फिर आप इन दोनों का रेशियो वैल्यूज निकालो और दिखाओ कि वो दोनों ऐड करने से 90 होता है कि नहीं. We assume that the animal here was a donkey and then we found exactly the tower of Pebble City is the same. The flat number is also coming same. So it is confirmed that fellow is the donkey. That's his answer to that. है ना? नया हो रहा है? No, not two equations. You say that this is ऐसा करने हैं. देखो, say sine of alpha. Come here. Can I say sine alpha is equal? Sorry, sine alpha बोल रहा हूँ. Tan alpha. Tan alpha is equal to 6/4. Can I say that? राइट. सो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2. ये ऐसा वैल्यू दिया है क्या? 4 मीटर 9 मीटर. ओहो हो चिल्ड्रन, देयर इज अ प्रॉब्लम हियर बिकॉज इफ यू डू इट दैट वे दे आर गेटिंग. नो, यू कैनॉट डू इट इन proof manner. You cannot do it in proof manner. This is an interesting problem. This is an NCERT. Wait 1 minute, huh? But this is the old NCERT. But anyways, we'll do it. अब ऐसे करो, छोड़ दो इसको. Let us do it. Don't take it as 6 meters, okay? Take it as, we have to prove that this is 6 meters. 1 minute, huh? Okay. चलो. Let us say this is h meters. Now come by tan of alpha. What is tan of alpha? Tell me, what is tan of alpha? H/4. Right? What is the relation between 90 minus alpha and alpha for tan? Cot. Yeah, tan alpha is also equal to, but this problem will not come in your exam. You know, because this interchangeability is not there in your syllabus now, but we will do it. As I told you, 90 minus में tan और cot का relation same होता है, sin is cos. That's what we use, right? How do you say sin 30 is equal to cos of 60? How do you say that? This is basically cos of 60 and cos of sin 30. So sin of 90 minus theta is equal to cos of theta. ठीक है? In tan it is like this, cot. Now let's do the value for cot.
cot 90 minus alpha. Tell me what should be cot 90 minus alpha? Cot tan is what? H by 9. So cot should be 9 by h. Cot should be 9 by h. Have you got it? ठीक है? Right. Now we have to prove that this is cot alpha. So यहाँ से h का वैल्यू निकाला तो बच्चा h is how much? 4 tan alpha. Agreed? And यहाँ से h का वैल्यू कितना आया? 9 by cot 90 minus alpha. Okay. Now let's multiply these two equations on both sides. Just multiply both the equations. Will it be same? नहीं. Or you can equate them. Equate करने से क्या फायदा होगा? अल्फा का वैल्यू आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा शायद. देखते हैं. Cot 90 minus alpha is equal to 4 tan alpha. अब क्या करेंगे? This is equal to tan of 90 minus alpha, but then you don't know the formula how to do 90 minus alpha. How to get the value of h? एक और ट्रिक है. सोचो आपको आ जाएगा. Try to think how to get a h square. कुछ रिलेशन कैसा बन रहा है पता है? मैं इस प्रॉब्लम को कैसे देख रहा हूं? h is to come as 6. We have a 9 and we have a 4. If a 9 and a 4 multiplies, how much do you get? 36. उसका रूट करने से 6 होता है. So that is a trick I have given. Now see how to do this problem. You can. थोड़ा सा कोशिश करो. इतना तो डेटा है. Try to prove. Almost you are there. थोड़ा सा बाकी है. I told you multiply both the equations. करो ना. We can multiply the equations also, right? Left hand side is equal to right hand side. Multiply both the equations. What is tan alpha equal to? Cot of? So instead of cot of 90 minus alpha एक और चीज लिख सकते हैं ना, tan alpha. हाँ, एक ही बात आ जाएगा फिर. इसमें इसको चेंज करो भी. Bring it back to 10. So you basically will have one equation as h equal to 4 tan alpha, which we have, and this equation changes to h is equal to what? 9 by tan alpha. Now multiply both the equations. H square is equal to 4 tan alpha into 9 by tan alpha. बड़े जल्दी आप लोग छोड़ देते हैं. अरे 9 4 is 36. तो हाँ, h का रूट करने से 6. So h will be equal to plus minus 6. And you will write discarding the negative as height cannot be negative. 6 तो आया. ये NCERT प्रॉब्लम है वैसे. Who did not understand this problem? Okay, let's do it once again then. Not an issue. Very good. Okay. We have to prove that the height is equal to 6. Zoe, is the figure okay with you? First of all, tell me. Okay, if the figure is okay with you, let us go with very small things. Let us say first the relation of what is tan of alpha. Tan of alpha is equal to h upon 4. Do you agree? I have taken this particular triangle. Right? Okay. I am taking another ratio, tan of 90 minus alpha, which is equal to h upon 4 plus 5, which is equal to 9. Is this okay with you? Right. Tan 90 minus alpha should be what? Cot alpha. Have you understood that part? Because tan and cot are complementary, sin and cos are complementary. So can I write this as cot of alpha is equal to h by 9? Same thing, right? Now I take this as equation A, I take this as equation B. One of the oldest marker pen which has become so broad, but it writes beautifully. Okay, now we multiply A with B. Let's multiply these. I am trying to multiply tan alpha with cot alpha, and I get a h by 4 into h by 9. Agreed?
tan alpha and cot alpha, I am multiplying them as tan alpha into 1 by tan alpha, which is equal to h square by 36. I think from here you can do the problem. These two cancel each other. So 36 is equal to h square, or h is equal to plus minus 6. And we accept it as plus 6. You understand? Yes. Clear? One more? Achha, copy this first. क्या हुआ? 36 6 नहीं आ रहा था तुमको? हाँ? नहीं आ रहा था. I cut the 4. See, I cancelled the 4. Why are you using that desi English? बंगाली को पूछा कहाँ जा रहे? स्टेशन जा रहा है, टिकट काटना है. I'm going to the station to cut a ticket. Our geography sir used to say, I'll throw the window out of you. What? Who is on the fan? Assam ना ठंडा रहता था. So somebody will switch on the fan. Who is on the fan? I'll throw the window out of you. I'll throw you out of the window. शिलोंग में एक छोटा सा पेड़ है. जब वो पेड़ छोटा था, मेरा जन्म नहीं हुआ था. In Shillong, there exists a small tree. When the tree is sapling, I was not takes place birth at that time. ठीक है ना? लड़की नीचे खड़ी है. मिसअंडरस्टैंडिंग. Misunderstanding English is very funny. Okay. Next one. Chalo. Let's do some stylish problems. Acha, chalo ye karte hain. This is a nice problem. A contractor, listen to the question. A contractor plans to install 2 slides for the, इस तरह diagram आपको थोड़ा सा issue होगा, हाँ. A contractor tries to install 2 slides for the children to play in a park. 2 slide बनाना चाहता है. एक contractor एक park में 2 slide बनाना चाहता है. So till now all फालतू दिया गल्ला. Okay. A contractor wants to make 2 slides for the children in a park. Now there are some clauses. For the children below 5 years, she prefers to have a slide. Contractor is a lady whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at 30 degree to the ground. So please make one big ground. Please make one big ground. First make one long ground and make a slide for the kiddos below 5 years. The slide should be such that its height is maximum 1.5 meters and it is at an inclination of 30 degree. हाँ, to the ground. और कहाँ पे inclination होगा? हैं? हवा के साथ. वायु देव है वहां पे. और क्या? जबरदस्ती आंसर मिला रहे हो. वायु देव है, हमारे साथ इंक्लिनेशन बनाइए. कुछ भी. हाँ, ठीक है. 30 degree to the ground. बना आपका slide 30 degree to the ground. We may need to again modify the diagram also, but so far we are correct. Our slide is at 30 degree to the ground. And then for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. So there's another slide which is at 3 meter. There's another slide which is at a height of 3 meter and at an inclination of 60 degree with the ground. दूसरा एक और स्लाइड बनाइए. उसके ऊपर थोड़ी बना दो, उसको बच्चे उसके ऊपर गिरेंगे. ग्राउंड है, कहीं और स्लाइड बनाइए. वही ग्राउंड में. अरे मेरे यहाँ स्लाइड बना ना बच्चा. हाँ, इधर से भी बना सकते हो, दूर दूर. ये बच्चा इसके ऊपर गिरना नहीं चाहिए खाली, है ना. तुम तो बर्ड का केस बना रहे हो इसमें. ठीक है. Another slide. What did I tell you about the height, beta? That slide is for the elder children, where our Shaurya can go and slide after he becomes okay. So that's at 3 meter from the ground and is at an inclination of 60 degree with the ground. So you can, now the question comes, sir, although you all have drawn very good architect type of drawings, नेहा का drawing भी ठीक है. नेहा अपने दोनों drawing को ऐसे merge भी कर दे सकते हो. हमें क्या लेना देना है? हम तो क्या पढ़ रहे हैं? Trigonometry. See the diagram. I'll go by how Neha has drawn. The first slide Neha has drawn, or every one of you have drawn, is she has drawn a slide like this. The next slide Neha has drawn is a slide like this. I am saying, rather than making the beautiful photograph point of Bali, this looks like that Indonesia, Bali's photo point, you bring these two and join them together ना. ऐसा एक डायग्राम बना दो, बस एक ही बात है. आपने को क्या मतलब है? एंगल है.
Yes, it will also work. I don't say it will not work. But if you do it here, then some good things happen. Right? It is absolutely correct. Even this is also correct. Even this is also correct. Nothing wrong. So if you are making Bali, you can make it Himalaya Parvat also. You know, Bali में ऐसा एक है ना, सब लोग फोटो खींचते हैं, Indonesia, Bali. Right. So the question is, what should be the length of the slide in each case? दोनों ही केस में स्लाइड की लंबाई निकालिए. बच्चों के स्लाइड और किशोरावस्था बच्चों के स्लाइड, दोनों स्लाइड की लंबाई निकालिए. हाइपो हाइपो में खेलना है आपको, हिप्पो मत हो जाना उसमें. ठीक है, चलो टैन करो, तान करो, भाई प्रस्थान करो, लेकिन आंसर निकालो. क्या चाहिए वैल्यू बताऊं? Tan का value ही है. Why are you worried about? She is saying tan, तो आपको लग रहा है साइन नहीं करके कोई महासाइन करने से होगा. आप अपना कीजिए ना, आप इनकी बातों में क्यों जा रहे हैं? और आप अपना कीजिए. अल्टीमेटली आंसर चाहिए. एंड इफ द आंसर इज करेक्ट, बोथ ऑफ यू शुड से द सेम थिंग. Orchestrate the same melody, you know. What is value? Half. Sin 30 is half. Sin 60 is root 3 by 2, whatever is cos 30. My melody. एक डॉल होता है. Oh, you don't know. हाँ? हाँ, the toy. My melody, cinema roll and my melody and all. My sister-in-law's daughter has taught me all. Hello Kitty, cinema roll, my melody. For this small side, Yeah. the length should be 3. For the small side, the length should be 3. The younger children one, you are absolutely correct. The parents will love you because you've got a very nice slide for them. That's 3. Don't look at my face, Sarthak. The answer is not written on my face. Try to work out the problem instead of, you know, looking on my face. 2 root 3? Yeah, it's 2 root 3. The elder slide would be 2 root 3. Sin 60 root 3 by 2. So we will really spend time with this one. This one teaches me who is my melody in this. 3, 2, 1. There's your order. I don't remember placing an order. What's there inside it? See, it's a mystery. You come from Swiggy or Zomato? Switch. Swiggy? Yeah. And how many more deliveries do you have to make? Any food that I want. I know that, but I've not seen a Swiggy delivery person who keeps hopping around me. Can you be steady for 1 minute and then tell me what you want to deliver to me? No. This is a mystery box. Mystery box? I've never heard Swiggy delivering mystery box. I've heard them delivering food items. Look at me. This is this mystery box. Okay. When you open, you'll see someone. I'll see someone. Yeah. And Open it. what are we having for breakfast tomorrow? Anda paratha. Oh. Paratha. This one is sister-in-law's daughter. They are born brought up. That too born brought up in Chennai. Now they say never they've never stayed abroad and all. So when she went for a schooling in Mumbai, बचपन से वो film program देख के full accented है ये. So when they went for a school admission in Bombay, so they used to say, "Acha ji, all have returned from abroad." They said, "No, we are from very much Desi, from Chennai, now in Delhi." So she taught me. She's got a basket which she takes to sleep. In that basket, there is Hello Kitty 1, Hello Kitty 2, Cinema Roll, My Melody, and once they are asleep, when she is asleep, then throw everything in. Her concept of everything is 3D. Say suppose if you ask her make flowers, she'll draw a flower, then she'll cut it. She'll make a basket, then she'll cut it. Then the flower inside the basket with Fevistick. The whole house has become sniffer hai pura. And if my father and mother are watching television and glued, that's her best time. इतना कागज काट लेता है आधा घंटा. My melody. Cinema roll. Okay, the next problem done. All of you got the answer, beta? 3 and 2 root 3. 3 would be the slide. So makes a sense also. Just try and understand. Just see. If you try to make a slide which has got now this is a beautiful observation. Whose slide did you find longer in size?
द चिल्ड्रन, राइट। तो हॉस्पिटल्स में कैसा रहता है, इफ यू वांट, see what is a good ramp in a hospital, they have got ramps, right, where the stretchers are taken. So if you want the ramp to be less inclined, right, we want the ramp to be less inclined, then the building should be very long so that you have a longer inclination plane, right, will be comfortable. जैसे पी टावर में अभी क्या कर रहा है, पी टावर आई हैव हर्ड देयर आर सम ड्यूप्लेक्स फ्लैट, वहां पे एकदम सीढ़ी ऐसा ऐसा दे दिया है, बिकॉज द स्पेस इज लेस and you have to cover this height in 2 ramps, so you have to increase the angle of inclination. Means they are those series from where you can have that Hindi movie nahi, and that bahu falls down na 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 na, that one. Yeah, chalo next question. This is a lovely question. We have a kite, एक पतंग है हमारे पास, पतंग, a kite that's flying 60 meters above the ground. Now don't be very careful what you're trying to make. Kite is flying 60 meters above the ground. वो नहीं है जो आप सोच रहे हो. 60 meters above the ground. हम काइट को हाइट ऐसे ऐसे करके देखते हैं क्या वानिया? काइट ऐसे देखते हैं इतना हाइट पे. 60 meters above the ground मतलब हाँ, ये टावर हो गया आपका एक तरह का, ठीक है, वेरी गुड. और ग्राउंड बना लीजिए. सो मेक द काइट एंड मेक द ग्राउंड. अगेन नेहा, ऑलवेज बी केयरफुल. ना ठीक है, बना लिया. To make the height always a little bit this side. You don't know where the problem will land up. They may say 2 children are observing the kite. Then your diagram goes for a toss. Okay. So the string attached to the kite. This is what Vanya you were trying to say. The string attached to the kite. That would be the part of the hypotenuse. However, when we fly the actual kite, the string is not like a hypotenuse. It will be like this. ठीक है ना? So the string attached to the kite is temporarily tied to the ground. Means is pegged to the ground. पतंग के धागे को हमने जमीन के साथ गाड़ दिया है. Inclination of the string with the ground is 60 degree. Inclination of the string with the ground is 60 degree. Is your diagram done? Okay, very good. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. वैसे slack हो जाता है ना, slack हो जाएगा तो hypotenuse फॉर्म नहीं होगा, right angle triangle नहीं बनेगा ना. ये भगवान, ये लड़की कैसी है पता है, ये बड़ी सी 2 बेटियों की शादी करके कहता है आपने मुझे वो ऑटो वाले का बिल नहीं दिया, वो जो उस शादी में ऑटो बिल का कितना वैल्यू होता है बेटा, 80 रुपए का, लाखों की शादी में. यू गॉट द आंसर? हाँ, एंगल है हमारा 60 डिग्री पे, सही 60 मीटर्स एंड द एंगल इज 60 डिग्री. 60 का सौदा हो रहा है. sin 60 is √3/2 which is cos 30. अब तक याद हो जाना चाहिए, 2 बार मैं बोला आपको. Zoe, how was weather? I had asked you. I had asked you to which was horrible? Penang. Langkawi and Penang. You went to Langkawi also, or only Penang? Only Penang. Okay. You actually click 2 pictures before after. All will go away. What is the answer? 40√3 सही जवाब. 20,000 रुपए जीत गया आप. पहली बार आपने अपने आप को मानव रूप में परिचय दिया है. अच्छा वो था, तो आप सुपर मानव हुए. 40√3 आ गया आंसर. How many of you got 40√3? Good. 40√3. Sanvi 40√3. You 40√3. 40√3 आना चाहिए आंसर. It's a simple drawing. Right angle triangle. आदित्य पतंग उड़ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा. अगला क्वेश्चन. 1.5 मीटर टॉल बॉय. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, पहले ग्राउंड बना लीजिए, लंबा सा ग्राउंड, एंड मेक ए 1.5 मीटर टॉल बॉय standing at some distance from a 30 meter tall building. तो एक टॉल बिल्डिंग भी बनाइए, और उससे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, at what distance the boy is standing we don't know. बच्चा कितना दूर खड़ा है, कुछ दूरी पे खड़ा है. बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल और लड़का है 1.5 मीटर टॉल. कितना दूर में है वो नहीं पता. ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज चक्षु, eyes, netra, to the building, now is the interesting part, increases from 30 to 60 as he walks towards the building.
मतलब जो पॉइंट से आपने डायग्राम बनाया वहां से 30 डिग्री बनाइए और बच्चे को थोड़ा और पास लाइए बिल्डिंग का। जब बच्चा देखो, जब बच्चा बिल्डिंग के पास जाएगा तो और ऊपर देखेगा, वहां से 60 डिग्री बनेगा। Did you understand? This is the zameen, this is the building, this is the bacha observing at 30 degree. Same bacha coming here observing at 60 degree. I don't know what is this distance. I don't know what is this distance in the problem so far. Have you understood? Find the distance he walked towards the building. बोले तो ये डिस्टेंस निकालना है, कितना बिल्डिंग की तरफ चला। एंड दिस इज हाउ मच बच्चा, 30 मीटर, और लौंडा कितना है, 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, कीजिए कितना बिल्डिंग के। नाउ यू हैव गॉट अ बिट ऑफ ग्रास्प आई थिंक, या मैं अपने आप को सांत्वना दे रहा हूं, सच में आया तो गॉट लिटिल बिट ऑफ ग्रास्प। जोई, बिल्डिंग, द बॉय इज 1.5 मीटर। Are you able to, once you do that yellow page job na, your 80% of the problem is done if you are doing that correct. So make sure 1030 1 by root 3, 1060 root 3 होता है, 1030 1 by root 3। in नवंबर में 47, तुम 15 साल, किसका मेमोरी शार्प होना चाहिए, तुमरा कि हमरा? हाँ, दोनों का। तुम तो भरत जैसे बात कर रहे हो। सीता देखो कैसे राम के साथ चली गई। लेट्स गो, who indulges in all these बर्तन माजोस? Let Urmila and Mandvi they do it. Let's go. My mother keeps on getting irritated when she watches Ramayana. I watch with her. I keep on giving. उसको रहना नहीं था सांस के साथ, इसलिए चली गई। बाकी 3 तो रह गए ना, बाकी 3 रह गए। एंड इफ आई वाज उर्मिला आई वुड हैव डिवोर्स्ड लक्ष्मण। शादी करके क्यों लाए थे फिर? और सबसे चालाक है भरत, देखो पूरा एंजॉय करके राजपाट चलाया, लेकिन कुछ भी है तो श्री राम जी चला रहे हैं, उनके चरण है बस, है ना। Same technology was done by Aurangzeb in the Mughal Empire. He used to do everything and anybody asked who is doing it? मैं नहीं, शाहजहान। मैं तो मुगल सम्राट नहीं हूँ, सब कुछ शाहजहान है। शाहजहान कहाँ है? कैद में है। The boy walks 10 root 3 meters. बाय कितना चला जी? ना, गलत है। रूट 3 पार्ट करेक्ट है, बाकी गलत है। देखो फिर से देखो, डेटास वी हैव आर 30, 60, 1.5, 30, दैट्स ऑल। And it will, the answers will be all exact match, huh? They will come exact matches. And if you are leaving it in root 3s also, I don't mind. For me, I don't mind. क्या अमूल्य, लड़का चलना शुरू किया कि नहीं? हाँ, कहाँ पे है लड़का? सर लड़का चला गया घर में। 9.5 रूट 3 भी नहीं है आंसर। 28.5 रूट 3 नहीं होगा। हाँ, नो 28.5 रूट 3 नहीं होगा ना। 28.5 रूट 3 would be the entire how far he has walked. This distance you need to find. 28.5 root 3 makes sense to this question. 28.5 root 3 will be this distance. It makes sense. From there you have to subtract something which will be 9.5 root 3. So the answer will come 19 root 3. You are correct halfway. ये कौन सा प्रॉब्लम का फिगर था? पतंग वाला, इसी का? अच्छा, ये इसका। लड़का खो नहीं जाएगा। आंसर विल बी 19 रूट 3। नेहा एंड आद्या, व्हाट यू फाउंड 28 इज द पूरा। हाँ, उससे अभी छोटा वाला निकालो। दे डिडंट आस्क यू हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम द टावर।
they asked you how far did you walk towards the tower. There's a difference between the two. 19. Understood? क्या किताब उताब बंद कर लिया तुम? तो ये क्या है, गिटार का कॉपी लाते हो, मैथ्स पढ़ते हो, ये मैथ्स कॉपी है। पॉकेट डायरी मिलता है ना गोलचास में, छोटा वाला, वो मिस्त्री रखता है। हाँ साहब आपका सामान बोलिए, रात का खाना बोलिए, ट्रेन में आता है ना लेने के लिए, सब रात का खाना बोलिए, वो लेके आ जाना, उससे भी कर सकते हैं। ऐसा ये साइज का, ओनली दिस मच साइज, स्पाइरल बाउंड। डन? Did you all get 19 root 3? If you are done, then one more and then we do Prasthan. Shall we? One more. Interesting. Now, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। You know what is a lighthouse? Yeah. Sea में रहता है ना, to guide the ships and all. An observer from the top of a 75 meter tall lighthouse. तो सबसे पहले एक ग्राउंड बना लीजिए। अल्टीमेटली ऑल प्रॉब्लम्स आर ग्राउंड एंड टावर। उसमें एक लाइट हाउस है, दैट इज द सी, ऑल अराउंड इट इज अ 360 सी। सो हाउ मच इज, व्हाट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस? 75 मीटर, एंड योर ऑब्जर्वर इज ऑन द टॉप ऑफ इट। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन टू शिप्स, देयर आर टू शिप्स, तो आप either side बना सकते हो, either side means on the same side you can make two ships, are 35 degree and 45 degree. The angles of depressions are 30 and 45. 30 and 45. Now first make the diagram and then try to find out who is 30 and who is 45. ये गलत हो जाएगा डायग्राम बेटो, जब तक आपको नहीं बोले either side, आप सेम साइड में रखिए। Try to look at this way. See Adya, see, no, first of all, where you are going wrong. Which one is closer? Not like that. First understand, I am a lighthouse in the middle of the sea. There are two ships this way and that way. I can still make a straight line with the two ships. 360 घूम रहा है ना ये, so with the same line आप बनाओ, ठीक है? Got it? So on the same side, one angle will be 45, one is 35. Depression है लेकिन ये, but how do you make the depression angles? They will be same as the elevation angles only. यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए आपको। देखो, this is the lighthouse, this is the lighthouse, this is the depression angle on one of the ship. So how do you make the depression angle? This is the depression angle alpha. So if this is alpha, this will be alpha बच्चा। Another ship is here. So this is one ship, this is one ship. This angle is how much? Beta. So this angle will be beta. Now you tell me who should be bigger, beta or alpha? Alpha should be bigger. तो ये हुआ 45, ये हुआ 30। दिमाग लगाइए, हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 45 और 30 बन गया, कहाँ गया? प्रॉब्लम है, खो गया है। हाँ, one of the ship is exactly behind the other on the same line, so your diagram holds. Okay, find the distance between the two ships. तो हमको ई दूरी निकालना है। सेम प्रॉब्लम, इसमें लौंडे का हाइट था, इसमें नहीं है। सेम थिंग, दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, नॉट द डिस्टेंस ऑफ द नियर शिप टू द लाइट हाउस, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। So basically you have to find out, either you find out the farthest distance from the lighthouse, the nearest distance from the farthest, subtract the nearest, then you get this. What is tan 45? Tan 45 is always 1. Don't ask police question. That is the easiest data. इसलिए आपको 45 दिया, और 45 देने से वो isosceles triangle है भूतनी को। See, 1 minute. If they give you 45, this is how much? 90. So this has to be 45. That means whatever is the height, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देगा। तुम लोग तो करना शुरू हो गए, फरान नाइट्रेट और प्री-आइसोलेशन ढूंढ रहे हो। What is the height of the tower? 75. This will also be 75, because it is isosceles triangle. Whenever they give you 45, get your eyes lit. You must have done something good in your previous birth or current birth, that you got a easy question.
ये जो है ये भी वही है, तो ये तो तुमको दे ही दिया, अब तुम्हें सिर्फ निकालना है ये बड़ा वाला, उससे 75 निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। चिल्ड्रन, डिड यू अंडरस्टैंड? 45 डिग्री व्हेन दे गिव यू 45, दैट मींस दिस इज आल्सो 45, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। व्हाटएवर इज द हाइट इज दिस सेम। अब अपने जिंदगी का 1 मिनट रिवाइंड करो, क्या आज सोचा था कुछ सीखने को मिलेगा? फरहान नाइट्रेट एंड प्री रेजुलाइजेशन। 25 Root 3 is 1.7. 1.732 क्या था ना आया डिस्टेंस बिटवीन, आप रूट में छोड़ सकते हो आंसर। 25 रूट 3 नहीं, 25 रूट 3 तो नहीं होगा। tan 30 का वैल्यू निकालिए ना, व्हाट इज tan 30? 1 by root 3 is equal to 75 by 75 plus x. Oh, 75 by 75 plus x भी रहेगा ना, वही x से निकालना है आपको। हाँ, या सो हाँ 75 root 3 minus 75, so take the 75 as common and put in bracket root 3 minus 1, which is equal to 75 into 0.732 if you have time. Which is हाँ नहीं, जरूरत नहीं, 54. बहुत अच्छा, आप बहुत उन्नति कर रहे हैं। Yes. सो आई विल कॉल दिस चैप्टर डन फ्रॉम माई साइड। अब आपको घर में करना है, ऐसा और एक दिन तो वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे मैं बैठ के मैं गाऊं तुम सो जाओ नहीं कर सकते, और अब अपने घर में खुद लोरी गाइए, सोइए। आंसर आ गया 75 इंटू रूट 3 minus 1. Root 3 is 1.732, 1 is 1, so the value is 0.732, no required, you can just listen it. So children, please do first NCERT. NCERT is your Bible. NCERT पहले पूरा खत्म करो, then go back to these books. We will again come back to revision. Our next class we will be starting with arithmetic progressions. One of the most easy and very cute chapter. मजा आएगा आपको करके, arithmetic progressions. No algebra, nothing. All you need to know is subtraction and multiplication. That's it. And addition. The court is adjourned till the next session. Tomorrow 5.